Good morning and welcome to today's session on Kia AI, an innovator's story. As you know, the NCID is organizing a weekly 1 hour Facebook Live and YouTube Live session on innovation, entrepreneurship, and startup. This is meant for IGNOU students and faculty. The aim is to encourage and motivate the IGNOU students towards innovation, entrepreneurship, and startup. The 35th session in this series is being organized under the Impact Lecture Series of Ministry of Education's Innovation Council and is titled Kia AI, an Innovator's Story. Artificial intelligence and robotics are the modern day technologies that are rapidly making their foray into our lives and making an impact through their efficiency. In fact, we are all encountering artificial intelligence from morning till night. Some of the best examples that we come across on daily basis are biometrics to unlock your mobile phones, such as Face ID, social media feeds, tools like Grammarly and Google Search, digital voice assistants such as Google Home, Siri, and Alexa, travel apps, banking, etc., to name a few. Smart home devices employing artificial intelligence is increasingly being used to make our homes smart. Today, we come across smart refrigerators, smart ovens and stoves, and smart washing machines that are available in the market for the consumers. These appliances run on artificial intelligence and Internet of Things and are sometimes combined with robotics, such as robot vacuum cleaners. The availability of these established innovative products naturally begs the question, is there any scope of more innovation in this area? The answer is resoundingly yes. So, today we have brought to you one such innovation which we consider to be an improvement in the already existing innovation ecosystem of smart home appliances. In fact, this innovation is true to the spirit of Make in India. Let us listen to the innovator who has designed and developed this product, Kia AI. I'm happy to introduce you to Mr. Kunal Ambasht, the creator of Kia AI. Mr. Kunal Ambasht is presently working as the head of the Department of Robotics, Grizzly Vidyalaya Kodarma. He obtained the Bachelor of Technology from Vinoba Bhave University, Hazaribagh. He has a teaching experience of about 10 years and he has taught subjects like mechanical engineering, mathematics, physics, robotics. Mr. Kunal is not only a teacher but also a passionate innovator. He has designed and developed an advanced, totally offline artificial intelligence based home automation solution, which he has named Kia AI. Recently, the Indira Gandhi National Open University recognized his innovation and awarded him the Student Innovation Award 2021. The story of Kia AI is a fascinating one, and I'm sure our listeners will be interested to know more from Mr. Kunal about its origin and his journey of innovation. So I welcome you, Mr. Kunal, for today's session. We also have with us Dr. Om Prakash Sharma, Director NCID. Before I invite Mr. Kunal Ambasht, I would request Dr. Sharma to say a few words, please. Dr. Sharma. Thank you, Dr. Momita Das. Good morning to all. I welcome you all for the 35th session of the Facebook Live session on innovation and startup. And as you know, in every session, we are bringing some very interesting and inspiring story by some of our innovator students or some other external experts. They are interacting with the students and they are inspiring, motivating the students of IGNOU towards innovation, entrepreneurship, and startup. In the same series, as Dr. Momita has mentioned, we have today Mr. Kunal Ambasht. We had seen him during this Student Innovation Award scheme, and we have interacted him several times and what kind of innovation he has done. He has brought a very innovative improvement in the automation in the home real estate sector.
without using the internet and things. That is a very innovative aspect of that. And it will be, I think, very inspiring and motivating for all the students of IGNOU to listen to him and then get an idea what kind of problems can be identified and can be considered for finding the innovative solutions. I hope Mr. Kunal will share why he thought of this problem and how he came across that kind of idea, innovative solution, and then what kind of challenges and problems he faced during his journey, and what are the success factors that he can share with the students of IGNOU so that they can also be motivated, and then what is the future of this his innovation and how the IGNOU students can be considered, can be encouraged for this kind of innovation in the future. So I think it will be very inspiring and motivating for all of us. We have listened to him several times, and I hope he will be sharing in a very interesting way to our students. So I once again welcome you all, particularly Mr. Kunal, to share his story of innovation. So over to you, Dr. Momita. Thank you very much, Dr. Sharma. So now I invite Mr. Kunal Ambasht to present his story. Mr. Kunal, please. Thank you so much, ma'am. Honorable Director, Sir, NCIDE, Assistant Director, ma'ams, and all the directors of regional centers. I'm also a part of IGNOU. I'm a student of this prestigious university, Indira Gandhi National Open University, the People's University. And I'm registered with Regional Center Ranchi, and I'm pursuing postgraduate diploma in computer application, PGDC, a new course. So first of all, I would like to start by thanking all of my teachers, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruvai Namah. Without you, this could not be there. जहां आज ये है किया शायद वहां नहीं होती अगर आप लोगों का आशीर्वाद इसे नहीं मिला होता. लेकिन मैं सच में खुद को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करता हूं कि मुझे आपका साथ मिला, आपने किया की पोटेंशियल को पहचाना और आज आपने किया को ये जगह दी. किया की स्टोरी 2017 में शुरू हुई थी, लेकिन किया के इनोवेशन की स्टोरी से पहले जो मेरा स्ट्रगल रहा है, मैं बस एक छोटी सी झलक आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत पीछे की. ये कहानी है आपको 2006 या 5 की रही होगी, जब मैंने एक्चुअली मैं बैठा हुआ था अपने घर के बाहर जहां एक स्कूटर खड़ा था. तो मेरे बगल में जो अंकल जी बैठे हुए थे, मैंने उनसे बस यूं ही पूछ लिया कि अंकल जी ये स्कूटर चलता कैसे है. तो उन्होंने कहा बेटा वो जो पीछे इंजन लगा हुआ ना उसके रेयर व्हील के पास, उससे चलता है. मैंने बोला नहीं अंकल जी वो तो पता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, वो चलता कैसे, वो कैसे काम करता है. तो उन्होंने मुझे कहा कि ना उस साइलेंसर से धुआं निकलता है, तो वो जो धुआं निकलता है तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से वो जो है वो वर्क करता है. ये आंसर सुन के मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ. मुझे लगा नहीं, इतना तो नहीं निकलता है कि जिससे इतना प्रोपेल हो जाएगा कि इतनी आराम से और इतने अच्छे से चल पाए. और तो मैंने उनसे पूछा कि इसकी पढ़ाई किस में होती है, तो उन्होंने कहा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. पता नहीं क्या हुआ उस दिन मेरे दिल ने ये फाइनल डिसीजन ले लिया कि ठीक है मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगा और मैं पता करूंगा ये काम करता कैसे है. और वही वो दिन था जिस दिन मैंने ये तय किया कि कुणाल अम्बष्ट इज गोइंग टू बी अ मैकेनिकल इंजीनियर. एंड मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जगह बनाने के लिए, और मुझे एक जगह मिली और मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हजारीबाग 2013 में, और मैंने फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ अपनी डिग्री कंप्लीट की. एक छोटा सा वाकया मैं आपको और बताना चाहूंगा. पता नहीं मुझे ये यहाँ शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एग्जैक्टली आई डोंट नो. लेकिन ये कहानी है आपको 2009 की. 2008 की होगी. मैं 11th स्टैंडर्ड में था. इट वाज समर्स ऑफ 2008, और मैं अपनी फैमिली के साथ अपने घर में बाहर आंगन में बैठा हुआ था. स्काई वाज क्वाइट क्लियर, बिल्कुल क्लियर था आसमान. वहां पर मैंने एक बड़ा कंसिडरेबली बड़ा, मतलब मून से बड़ा, मैंने एक व्हाइट कलर का लाइट स्पॉट देखा.
ये व्हाइट कलर का जो लाइट स्पॉट वहां नजर आ रहा था, एक छोटी सी बात तो मेरे को समझ में आ रही थी ये, कि ये लाइट स्पॉट जो है वो वहां बन नहीं सकता स्काई में, क्योंकि वो ओपेक नहीं है। तो फिर भी मुझे लगा कि हो सकता है शायद कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई हो और ऐसा हो रहा हो, तो भी वहां लाइट की बीम्स जाती हुई नजर आएंगी। मैं छत पे गया, छत पे जाकर के मैंने पूरा सर्च किया आसमान में, कहीं भी मुझे लाइट की बीम नजर नहीं आई। मुझे लगा हो सकता है मेरी आंखें धोखा खा रही हूँ। मैंने अपने पापा मम्मी अपने भाई से पूछा, सब वही देख रहे थे। तो मुझे ये लगा कि भाई ये कुछ नॉर्मल सा तो नहीं है, डेफिनेटली कुछ नॉर्मल सा नहीं है। और वो कुछ देर स्काई में इधर से उधर मूव करता रहा और ऑल ऑफ सडन डिसअपियर हो गया। फिर मुझे लगा कि पता नहीं क्या था। उस समय मैं बहुत डिस्कवरी चैनल और नेशनल जियोग्राफी बहुत देखना पसंद करता था, और मैंने देखा कि डिस्कवरी चैनल में भी दुनिया के कुछ दूसरे हिस्सों में भी उसे देखा गया था, और वो लोग पता नहीं शायद उसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कह रहे थे। पता नहीं वो क्या था, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतनी सी बात जरूर जानता हूँ कि उसने, उस पर्टिकुलर इवेंट ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं अपना करियर रिसर्च में एक्सप्लोर करूं, कुछ बढ़िया करना है, कुछ बड़ा करना है। 2009 में जब मैंने एडमिशन ली बीटेक में, तो पता नहीं क्यों एक दिमाग में एक नया सा ख्याल आ गया असंभव को संभव करने का। तो कहीं से मैंने सुना था पीएमएम के बारे में, परपेचुअल मोशन मशीन, और मुझे ऐसा लगा दिल में कि नहीं, ये बन सकता है। ऑल्दो मैं थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को जानता था कि ये इम्पॉसिबल है, परपेचुअल तो कम से कम दिल को ये भरोसा जरूर हो जाएगा कि हाँ ये सही है, सही लिखा हुआ है। मैंने अपनी लाइफ के 3 साल उस पर लगाए, और उन 3 सालों के बाद मैंने ये सीखा कि पीएमएम पॉसिबल नहीं है। जिन भी मेथड से मैंने पीएमएम को ट्राई किया, वो कोई भी मेथड वर्क नहीं किया। लेकिन मुझे याद है कि उस समय मैं एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर से मिला था। सर ने मुझे एक बात कही कि अगर तुम्हारा पीएमएम नहीं भी बना, तो भी तुम कुछ ऐसी चीज हासिल कर लोगे जो सच में बहुत कमाल की होगी। एंड थैंक्स टू दैट पर्टिकुलर इवेंट, थैंक्स टू सर, कि उस इनोवेशन के दौरान मैंने उस मशीन को डिजाइन किया, जो मशीन बहुत ही हाई एफिशिएंट थी, और मैंने बाद में उसके लिए पेटेंट फाइल किया। और सूनर और लेटर आई विल हैव द पेटेंट इन माय हैंड। तो इसके बाद का एक और इवेंट मैं आपको बताऊंगा। मैं उस समय एज ए पीटीएल सर्व कर रहा था, पार्ट टाइम लेक्चरर आफ्टर माय बीटेक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा में। तो उनके थ्रू मुझे एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जहां पर आईपीआर के बारे में डिस्कशन होना था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। तो वहां पर जब मैं गया, तो वहां पर मुझे डॉक्टर एसआर के राव, जो कि डिगवा डी धनबाद में डिगवा डीएसीएसआईआर लैब है, उसके चीफ साइंटिस्ट एंड हेड थे। तो उन्होंने आईपीआर के बारे में इतनी गहराई में चीजों के बारे में बात की, इतना सारा कुछ उन्होंने बताया एग्जांपल्स के साथ। और जब मुझे पता चला कि उनके पास में बहुत सारे आईपीआर हैं, उस दिन कहीं ना कहीं दिल में ये लगा कि एक दिन मेरे पास भी होगा। आई विल ऑल्सो हैव वन डे, आई विल ऑल्सो हैव अ सेंचुरी ऑफ आईपीआर। लेकिन अब आईपीआर के बारे में जाना कैसे जाए, सीखा कैसे जाए? तो मैंने इंटरनेट पर सर्च करना स्टार्ट किया, कोई तो होगा जहां पर आईपीआर की पढ़ाई होती होगी, ताकि मैं आईपीआर को अच्छे से समझ सकूं और उसको डील कर सकूं। तो थैंक गॉड मुझे विपो की लिंक मिल गई, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और मैंने वहां से 2 कोर्स परस्यू किए, और उन 2 कोर्स को करने के बाद बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है कि मैं आईपीआर को समझता हूँ, और जो उसके इंटरनेशनल लॉ है उनको समझता हूँ। और आज भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास 11 कॉपीराइट्स हैं और 2 पेटेंट अप्लाइड हैं ऑलरेडी। तो ये जर्नी थी उस समय की, जब मैं बहुत जब मेरे पास में इनफैक्ट कुछ भी नहीं था। किया एआई 2017 में बनी, लेकिन इसके बनने की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हुआ यूं कि एक बार मेरे फादर और मेरा छोटा भाई, वो एक्चुअली बाइक से ये लोग कहीं जा रहे थे, तो सामने से किसी की मिस ड्राइविंग की वजह से ये उन्हें बचाने के चक्कर में ये दोनों ही गिर गए। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि चूंकि लगा रही थी, तो इनका सर बच गया,
उनके सर को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि अच्छी हेलमेट पहने हुए थे दोनों। लेकिन मेरे फादर को पैर में थोड़ी ज्यादा ही चोट आ गई और उनकी बोन्स पे स्क्रैचेस देखने को मिले एक्सरे में। तो डॉक्टर ने उन्हें सीधे तौर पर बेड रेस्ट ये कर दिया, रिकमेंड कर दिया कि इन्हें बेड रेस्ट पे जाना चाहिए, इन्हें बेड रेस्ट पे होना चाहिए और ये पूरी तरीके से आराम करें, तभी जाकर के ये रिकवर हो पाएगा। मेडिसिन भी चली और लेकिन उसमें मैंने हमेशा, मेरे फादर हमेशा मेरे लिए एक रोल मॉडल रहे हैं। वो हमेशा बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हमेशा, कि मतलब किसी भी परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अपना धैर्य मत खो, पूरे धैर्य से लगे रहो। और मेरे फादर भी चूंकि वो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, ही इज अ माइंस मैनेजर, तो उन्होंने भी जब मेरे आइडियाज को सुना, मेरे पापा ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि बेटा ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लगे हुए हो, करो, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर, तुम कुछ कर सकते हो, तुम जरूर कुछ करोगे बढ़िया, तुम करते रहो, तुम हिम्मत नहीं हारो। और मेरे इनोवेशन में मेरे फादर ने पैसा लगाया, मेरे भाई ने भी उसमें, जो बेचारा वो अर्न कर रहा था, उसने भी वो पैसे लगाए। कभी मुझसे नहीं पूछा कि भैया सक्सेस का रेट क्या होगा इसका, बस उन्होंने मेरे सपने में इन्वेस्ट करते गए। आज वो लोग बहुत खुश हैं कि मैं जिस जगह पर हूँ। अगर मैं अलाउड हूँ तो आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग। मैम, एम आई अलाउड टू शेयर समथिंग? Sure, go ahead. Thank you so much, ma'am. मैं यहाँ से एक चीज जरूर कहूंगा, दिस इज समथिंग यू कैन नॉट बाय। ये कुछ ऐसी चीज है जिसे आप खरीद नहीं सकते, इसे हासिल करना पड़ता है। ये मेरे पापा हैं और ये मेरी मम्मी हैं। माय फादर मिस्टर कौशलेश कुमार अंबष्टा and my mother Mrs. Sangeeta Ambashta. My father is holding a certificate, student innovation award का जो certificate मुझे मिला, and my mama is holding the trophy that I received student innovation award 2021 के लिए। इनके चेहरे पर जो खुशी आप देख सकते हैं, वो जो शाइन आप देख सकते हैं, वो कहीं नहीं मिलती, उसे हासिल करना पड़ता है। और ये खुशी इन्होंने उस समय मुझे दिखाया और मेरे सपनों में किया, क्योंकि इन्हें पता था कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। एंड दिस इज माय फैमिली, मी, माय फादर, माय मदर एंड माय वाइफ मिसेज ऐश्वर्या अंबष्टा। तो ये चीजें, ये खुशी कहीं नहीं मिलती, ये बस हासिल करनी पड़ती है। तो जब 2017 में ये स्टोरी स्टार्ट हुई, 2017 में ये स्टोरी चली, तो मतलब उस समय मैंने देखा कि मेरे फादर बहुत ही ज्यादा असहाय हो चुके हैं, वो बेड पर हैं और हर एक चीज के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। लाइट भी चलानी है तो दूसरों को कॉल करना है, फैन भी ऑन करना है, टीवी चलानी, कुछ भी चीज के लिए। और मैंने कभी उनको इतना असहाय नहीं देखा, कभी नहीं देखा कि वो इतने कमजोर पड़े हुए हों कहीं। तो तब मेरे दिल में ख्याल आया कि नहीं, अब जब मैं गिर रहा था तो मेरे पापा ने कहा कि डोंट वरी, यू कैन डू दिस, तुम कर सकते हो। उन्हें पता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, जो मैं कर रहा हूँ वो उसको प्रैक्टिकली नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मैं कुछ पीएमएम को बनाने की चाहत रख रहा था और पीएमएम इम्पॉसिबल है। फिर भी कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि बेटा ये इम्पॉसिबल नहीं कर सकते तुम, उन्होंने कहा तुम कर सकते हो और तुम करो। तो मुझे लगा कि आज जब मेरे फादर बेड पर हैं तो मुझे अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है उन्हें पावर देने के लिए, इतनी पावर कि वो किसी पर भी डिपेंडेंट ना हो और मैं उन्हें उतना ही स्ट्रांग देख पाऊं जितना वो स्ट्रांग हैं। तो मैंने बस आई जस्ट स्टार्टेड विद दैट आइडिया। मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि मार्केट में कौन कौन से सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। तो मार्केट में मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन देखे, जिनमें से बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो इंटरनेट पर डिपेंड करती थी। इंटरनेट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करवाने के लिए। यहाँ से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसी डिवाइस तैयार की जाए जिसे इंटरनेट कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट ना हो, बल्कि बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के वो काम करे पूरी तरीके से ऑफलाइन जाकर के। अगर ऐसा हो जाएगा, और दूसरी एक और चीज मेरे दिमाग में थी कि जब मैं उसे डिजाइन कर रहा हूँ तो उसके स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर डिवाइस की जरूरत ना पड़े।
मतलब कुछ ऐसा ना हो कि जैसे मतलब मैंने मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर डिवाइस बना ली, अब मैं अपने यूजर से ये कहूँ कि चूंकि आपने मेरी डिवाइस को परचेज किया, अब आप एक काम करो, हमारे खरीदो, हमारे फैन खरीदो, हमारे ये खरीदो, वो खरीदो, तो फिर लोगों को ये फील होगा कि भाई इन्होंने ये खरीदवा लिया, उसके बाद अब कह रहे हैं कि ये सारी चीजें भी आप अपने घर की चेंज कीजिए। तो मुझे लगा कि नहीं, वो जनरल हार्डवेयर इंटरफेस के जरिए फुल कनेक्टिविटी शो करे। मैंने इसे टेस्ट किया, इससे बनने में काफी समय भी लगा, और उन 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 समय में मैं एक चीज आप लोग के साथ में जरूर यहाँ शेयर करना चाहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सक्सेस मिलने से पहले आप कई बार फेल होते हैं, कई बार फेल होते हैं, लगातार फेल होते हैं। आपको मतलब मतलब मैं ये चीज आपसे जरूर कहूंगा कि उस जब किया बन के तैयार हुई, तो मैं जब सुबह उठता था तो आंख जब मैं खोलता तो मुझे सब कुछ धुंधला नजर आता था। और साथ बहुत देर तक आंख रगड़ रहे हैं तो भी चीजें जो है साफ नहीं हो रही है, फिर आंख में पानी मार रहे हैं तो भी क्लियर नहीं नजर आ रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर मैम से मिलना चाहिए। मैं गया, एक यहाँ पर हमारे लोकेलिटी बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, मैं उनके पास गया। वो बहुत अच्छी आई सर्जन है वो। तो जब मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मेरी आईज को देखा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करते हो तुम। तो मैंने कहा कि मैम मैं कोडिंग करता हूँ, प्रोग्रामिंग करता हूँ। तो एक्चुअली वो मुझे जानती भी थी। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें ड्राई हो चुकी हैं। और काफी डांटा भी उन्होंने मुझे कि कर क्या रहे हो तुम, ये चाहते क्या हो आखिर तुम अपनी आंखों के साथ में। तुम्हारी आंखें ड्राई हो चुकी है, और दूसरी तुम्हारी आंखें फुली मैकेनिकल हो चुकी हैं। मतलब अगर मैं भूल जाऊं तो मेरी आंखें शायद मेरी आईलिड्स ब्लिंक नहीं करेंगी, वो मैकेनिकल हो चुकी हैं, फिक्स हो गई हैं। मुझे याद करके इनको बहुत प्रैक्टिस की मैंने उसके बाद में कि ये वापस से इसको लाया जा सके। मतलब बहुत देर तक मेरी आंखें ऐसी रहती है, ड्राई होने लगती है, तब पता चलता, याद आता है कि वो ये तो ब्लिंक ही नहीं कर रही। इस तरह की स्थितियां मेरे साथ में आई। तो और उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, और उन मेडिसिन को लेकर के मैंने मतलब अपनी आंखों को कुछ हद तक तो जरूर मतलब रिकवर कर लिया। मतलब अच्छा रिकवरी हो गई मेरी। तो मैंने ये स्टोरी इसलिए आपके साथ में शेयर की कि डरिएगा नहीं कभी। मैं जितने भी इनोवेटर्स आज मुझे सुन रहे हैं इस प्रेस्टिजियस NCIDE पोर्टल के जरिए, मैं आप सबसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, बिल्कुल भी कभी मत घबराइएगा, डरिएगा कभी नहीं। आपके सक्सेस से पहले बहुत सारे फेल्योर्स आपके रास्ते में आएंगे, 100% आएंगे। वो आपको टेस्ट करेंगे, क्योंकि जब कुछ बड़ा होने वाला होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, स्ट्रगल आपको करना होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे, एट द लास्ट ऑफ द स्टोरी, यू विल विन। अगर आपका डिटर्मिनेशन खत्म नहीं हुआ तो आप जरूर जीतेंगे। किया एआई के साथ में भी कुछ यही कहानी रही। वो समय बहुत स्ट्रगल का रहा। मैं रात में सोचता था कि अच्छा ठीक है, अब मैंने प्रोग्राम से चुकी ये चेंजेस ले आए हैं, तो अब इसका ये रिजल्ट आएगा। और जब नेक्स्ट डे इसको टेस्ट कर रहे हैं तो वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। जो मॉडल्स हम यूज कर रहे हैं वो मॉडल सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं। अगर क्वाइट इन्वायरमेंट में रिजल्ट सही आ जा रहा है तो नॉइजी इन्वायरमेंट में रिजल्ट गलत हो जा रहा है। तो बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम आने लगी। सेंसर्स पर्टिकुलरली कॉन्फ़िगर नहीं हो पा रहे थे, वो काम नहीं कर रहे थे सही से। एक इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो दूसरे इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहे हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन सही से काम कर रहा है तो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जा रहा है। वैसी स्थिति में एक चीज जो है वो हमेशा ध्यान रखनी है। आप जो सबसे बड़ी चीज जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा, धैर्य कभी मत खोइए। अपना धैर्य धारण करके रखिए, धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप धैर्य धारण किए रहेंगे तो आपको There has been a technological glitch, I guess. We have lost Mr. Kunal. So, as he joins, Dr. Sharma, would you like to give your views? अब तक जो उन्होंने बताया स्टूडेंट्स को, आप कुछ कहना Really, चाहें? it's very interesting. And then this story, what he has shared today, I think he did not share with us earlier. Because what kind of struggle, what kind of problems, difficulties he faced while designing and developing this
Kia innovation. That's very inspiring, and that shows his dedication and determination. Whole night he's working to develop that kind of programming and then doing coding. And in fact, this all is required because some good thing will not come only just you start something and then you will see the very see a joint. I'm extremely very sorry. I'm extremely very sorry. You can understand the technology. Internet थोड़ा disconnect हो गया था sir, all of a sudden. That's why your innovation is more important, because that's not depending on innovation. Yes sir. Depending on internet. Yes sir, क्योंकि इस तरह की स्थितियां सर कभी भी आ सकती हैं, और होम ऑटोमेशन में अगर ऐसी स्थिति आ जाए सर तो बहुत I hope you will highlight this when you are giving the features of your Kia. Yes sir, definitely sir, definitely. So जब आप इनोवेशन के किसी फेज में होते हैं तो हमेशा अपने आप को रेडी रखिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी होगा और आपको एक ऐसा रास्ता चुनना है. देखिए, कभी अगर आप वो काम करेंगे जो लोगों ने पहले से कर रखा है तो आपको लोग नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन जब आप कुछ ऐसा करेंगे जो पहले लोगों ने ना कर रखा हो, तब कुछ ऐसा नया होगा जहां पर लोग आपको नोटिस करेंगे, जहां पर लोग आपको सुनना पसंद करेंगे. और आज नहीं तो कल, सही है, थोड़ा समय तो लगेगा ही लगेगा, ये तो तय है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप चीजों को कर पाएंगे और प्रॉपर्ली वो चीजें हो पाएंगी. तो इसीलिए आपको अपनी जर्नी जो है वो लगातार चला के रखनी है. आपको रुकना नहीं है, थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकना है, और बस लगे रहना है अपने लक्ष्य के लिए, और हिम्मत नहीं हारनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. लेकिन हम जिस चीज के बारे में इतनी सारी बात कर रहे हैं, किया एआई के बारे में, तो बेहतर होगा कि अगर मैं किया एआई को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा पाऊं आप सबसे, तो इट विल रियली बी ग्रेट, क्योंकि आप सब उसको चलते हुए अपने सामने देखेंगे तो कहते हैं ना, सत्य को साक्षी की जरूरत नहीं होती, तो वो ज्यादा अच्छा होगा और एक अच्छी फीलिंग हमें लाएगा. तो मैम मैं सर से, ऑनरेबल डायरेक्टर सर से, मैम से परमिशन चाहूंगा कि मुझे परमिशन ग्रांट की जाए कि मैं इसके साथ प्रोसीड कर सकूं. Sure, go ahead. Go ahead, please. Thank you so much, sir. Sir, kindly allow me a minute. Let me connect once again. एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा समय लगा. मैं मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट हो गया हूँ और अब मैं किया को प्रेजेंट करूंगा आपके सामने. सो पेश है आप सबकी सेवा में किया एआई. चलिए अब मैं इसके साथ कुछ कमांड्स आपको दिखाता हूं. सॉरी टू इंटरप्ट यू कुणाल, आप जरा मोबाइल का वो मोबाइल को दूसरे एंगल पे करिएगा, 90 डिग्री पे. यस मैम. मोबाइल दिस वन रोटेट कर दीजिए, मोबाइल को रोटेशन वो उसका. हाँ, ओके मैम, जस्ट अ मिनट मैम. मैम ये सही है? हाँ, आई थिंक सो. या, थैंक यू मैम. तो चलिए मैं आपको सबसे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊं. ये किया का सोर्स कोड है. मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन दुनिया एक ऐसी स्टेज पर होगी जिस दिन मैं हैप्पीली इस सोर्स कोड को आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँगा, और आप सारे लोग भी मेरे इस वर्क को अपने वर्क में फर्दर यूज कर पाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक और फंडामेंटल्स के साथ में. तो चलिए सबसे पहले किया को जगाते हैं. कुणाल, आप अपने मोबाइल को ना, यस मैडम, मोबाइल का जो रोटेट करके ना एंगल चेंज कर दीजिए. आप 90 डिग्री पे मोबाइल घुमा दीजिए, बिकॉज ना ये, हाँ अब ठीक है. नाउ दिस इज गुड. ओके मैम. ओके, थैंक यू मैम.
Introduce yourself. Hello everyone, my name is Kia. I am an artificially intelligent personal assistant. I am developed and designed by Colonel Ambassador. How does your brain work? I am very sorry. It's a secured information. I cannot reveal it. Who is your creator? Colonel Ambassador. He is an engineer and my creator. Please check temperature. Please wait while I am checking temperature. 25.0 degrees Celsius temperature. थोड़ी सी गर्मी पड़ना शुरू हो गई है हमारे यहाँ. Please check temperature and humidity. Please check temperature and humidity. Please wait while I am checking temperature and humidity. 26.0 degrees Celsius temperature and 70.0% humidity. चलिए वो देखते हैं जिसके लिए हम सब यहाँ आए हैं. This is the electric bulb switched off. Okay, and here I am. Please switch on light. Electric bulb has been switched on. Anything else for you? Please switch off light. Electric bulb has been switched off. Anything else for you? And trust me, this all runs with the general hardware interface. मतलब ये वही LED बल्ब है जो हमारे और आपके घर पे लगा होता है. सेम LED बल्ब है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है. ये सेम सर्किट बोर्ड है जो हमारे और आपके घर पे मिल जाएगा आपको आसानी से. मतलब इसमें कुछ भी नया नहीं है. और ये चीजें मतलब पूरी तरह से जुगाड़ से बनाई गई है. मतलब इसमें मैंने कुछ भी अलग सा यूज नहीं किया है. अब चलिए इसके कुछ जनरल कॉग्निटिव स्किल्स के बारे में बात करते हैं. आई वांट टू टॉक टू यू. I want to talk to you. Let's talk. It will be fun-filled. Okay. अब मैं किया के कुछ आपको कुछ स्किल्स के बारे में हम लोग इससे बात करेंगे आज. तो चलिए मैं अच्छा हाँ एक और चीज मुझे इसमें दिखाना चाहिए आपको. जस्ट अ मिनट. स्विच टू कमांड मोड. Switching to normal or command mode. Please enable male voice. Please enable male voice. One more thing. How do you function? I am an AI-powered personal assistant. I run on the top of Raspberry Pi 3 and Raspbian OS. I always run offline to protect your privacy. I never track you, nor I collect any info. Okay, now change to male voice. I think I'm using a wrong command. Let me have a look here. Actually इसमें इतने कमांड्स हैं मैं खुद भी भूल जाता हूँ कई बार कि किस काम के लिए कौन सा कमांड दिया गया है. Let me start with this. I want to talk to you. Let's talk. It will be fun-filled. Okay. Now solar system. Let's talk. It will be fun-filled. What is a planet?
In the dynamicist definition adopted by the International Astronomical Union, IAU, a planet is a non-stellar body that is massive enough to be rounded by its own gravity, that directly orbits a star, and that has cleared its orbital zone of competing objects. The IAU has also declared that there are 8 planets in the solar system, independently of the formal definition. Okay. Tell me about moon. The moon is Earth's only natural satellite. At about 1/4 the diameter of Earth, it is the largest natural satellite in the solar system relative to the size of a major planet, the 5th largest satellite in the solar system overall, and larger than any known dwarf planet. मुझे हमेशा से टाइटन ने हमेशा से मुझे टाइटन Titan is the largest moon of Yeah. Saturn and the second largest natural satellite in the solar system. It is the only moon known to have a dense atmosphere, and is the only known object in space other than Earth on which clear evidence of stable bodies of surface liquid has been found. Let's talk. It will be fun-filled. Do you know IGNOU? Do you know IGNOU? Sorry, I'm giving a wrong command. Really very sorry. Do you know about IGNOU? Yes, I know about it. Indira Gandhi National Open University, the People's University is an open university, run by the central government of India, and with total active enrollment of over 3 million students, claims to be the largest university in the world. I am proud that my creator Colonel Ambassador is also a student of this prestigious university. And I'm also really proud of it कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी का एक पार्ट हूँ. तो इस तरह की बहुत सारी कॉग्निटिव स्किल्स किया में है और मैंने इसमें एक छोटी सी चीज का ध्यान रखा है कि कमांड्स को थोड़ा सा जो है वो Hello. I am really very happy to see you with me. जस्ट अ मिनट. स्विच टू स्लीप मोड. Switching to sleep mode. अब अच्छा हो गया. अब किया हमारी रहेगी. So let me switch to my system. You're not audible, Kunal. Ma'am, now am I audible? Yes. Thank you so much, ma'am. तो किया में अभी आप किया का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे थे कि किया कैसे वर्क करती है, कैसे फंक्शन करती है. आपने देखा कि किस तरीके से फिजिकल एनवायरनमेंट के जो पैरामीटर्स हैं उनको भी मॉनिटर कर सकती है, आपके हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकती है और जनरल कन्वर्सेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकती है. ऑल्दो मैं अभी भी यही कहूंगा कि किया जो है वो किया डेवलपिंग फेज में है, वो डेवलपिंग फेज में ही रहेगी, इसलिए क्योंकि वो एक बच्चे की तरह है जिसमें कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो रही हैं और बहुत तेजी से कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो रही हैं. तो मैंने जो ये कुछ कमांड्स को इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया है कि ये गलती से हमारी बातों को पिकअप ना कर ले, इसलिए हमें पर्टिकुलर कमांड्स पर ध्यान रखना होगा. ऑल्दो कुछ समय के बाद I can really assure you कि ये
Seems there is some problem at Kunal's end. Yes, Dr. Sharma, I think we'll wait for him to join. Yes, Uh, in fact, I would like to share with all the members who are here right now. This Kia AI is a kind of AI-based device which is handling a number of commands related to automation in home, and then as he has mentioned, certain cognitive aspects also. And it is in a developing phase. Certainly, a lot of work is still required. But good thing is that we are proud IGNOU students are doing this kind of innovation, and they are continuously doing, and then we are also supporting them. That's why we thought we should share their story, how, in what situation he came across this kind of idea, and how he took initiative, and what is the status of that device at the moment. And since when we gave him this award, I think he has improved also further, because we have been giving certain suggestions, like I was looking at Dr. RSP Singh's suggestion to just involve regional languages and Hindi also, so in the command form. That I think he is working, he has started, but it's still, at least in English, certain things are coming up, and then they are working. And he is in the process of improving it. Day by day is improving and doing some additional value addition in that. Yes, Kunal has joined. एक्सट्रीमली वेरी सॉरी सर मैम, एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, इंटरनेट की थोड़ी सी इशू है यहाँ पर चल रही है, ऑल्दो मैंने कोशिश की है अपने आप को अच्छी कनेक्टिविटी पे रखने की. ओके, यू कंटिन्यू प्लीज. सो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर अभी तक आप देख रहे हैं, अभी देखिए ना, मैंने पूरी कोशिश की है अपनी साइड से कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी एकदम स्टेबल रहे, बट कनेक्टिविटी हमारे हाथ में नहीं होती, ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर में प्रोवाइड करता है. जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि हम एक कन्वर्सेशन में एक साथ बैठे हुए हैं और हमारे साथ में ऐसा हो रहा है. जरा कल्पना कीजिए कि अगर ये सेम काम होम ऑटोमेशन के समय होने लगे तो, अगर होम ऑटोमेशन के समय जिसमें आप कमांड दे रहे हैं उसमें आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी लॉस्ट हो जाए तो, वैसी स्थिति में, या मान लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले हम सभी ने पूरे देश में देखा, कहीं ना कुछ जगहों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को रोक दिया गया. अगर वैसी स्थिति में इंटरनेट कनेक्शंस को रोक दिया जाए, इंटरप्ट कर दिया जाए, या काइंड ऑफ कनेक्टिविटी लॉकडाउन लगा दी जाए, तो वैसी स्थिति में उस तरह के सिस्टम डेड हो जाएंगे. और हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि जब मेरे घर के सारे सिस्टम एक होम असिस्टेंट से कनेक्टेड है या होम ऑटोमेशन के जरिए कनेक्टेड है, तो वो किसी भी कीमत पर डेड हो. हम हमेशा यही चाहेंगे कि वो लाइव रहें और चलते रहें. ऐसी स्थिति में किया एआई आपको एक बेहतर सॉल्यूशन ऑफर करती है, क्योंकि ये टोटली ऑफलाइन रन करती है. तो यहाँ पर जो एक छोटी सी चीज मैं आपको ये कि देखिए, चीजें जब नई चीजें जब आएंगी तो नई चीजें नए चैलेंजेस को लेके आएंगी, क्योंकि पहले उसको किसी ने किया नहीं है. तो चूंकि पहले उसको किसी ने किया नहीं है, तो आपको हर चीज जो है वो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करनी है. उसमें बहुत सारी तरह की नई प्रॉब्लम्स आएंगी, चीजें मिसमैच करेंगी, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगी, कॉन्फ़िगरेशन सही से मैच नहीं हो पाएगा. लेकिन ये सारी चीजें आपको खुद करनी है, और जब आप उसे खुद करेंगे तो आप एक नई चीज के साथ इस दुनिया के सामने आएंगे, और वो नई चीज आपको एक बेहतर कल देगी. मैं इस बात का पूरा भरोसा आपको दे सकता हूँ. एक छोटी सी यहाँ पर मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगा. जो ये मुझे किसी ने, मैं जब बहुत कमजोर पड़ गया था इन 2017, जब मेरी लाख मेहनत के बाद भी डिवाइस बन के तैयार नहीं हो रही थी, और बहुत समय बीत चुका था और बहुत खर्च भी हो चुका था, तो मैं बहुत कमजोर हो गया था. किसी मेरे चाहने वाले ने मुझे बहुत अच्छी कहानी सुनाई, और वो मैं स्टोरी आप लोग के साथ में जरूर शेयर करना चाहूंगा. सो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज. इसके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा. इसमें बहुत गहरी मीनिंग है, क्योंकि इसने मुझे एक नया रास्ता दिखाया. वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक टाइम पे एक एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट जो है, हथनी, और एक बिच, कुतिया, वो दोनों एक साथ में, दोनों की प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई. तो कुछ दिनों के बाद में जो कुतिया है उससे बच्चा हो जाता है, और वो उस हथनी को कहती है कि बहन देखो मेरा बच्चा. तो हथनी उसको देख के बहुत खुश होती है, और कुतिया उससे पूछती है और तुम्हारे बच्चे? तो वो कुछ नहीं बोलती और आगे चली जाती है. 1 साल बीत जाता है, तो
फिर जब उसे वो हथनी मिलती है तो कुतिया उसे कहती है कि बहन मैं तो दोबारा मदर बनने वाली हूँ और तुम, तो उसने फिर कुछ जवाब नहीं दिया और वो आगे चली गई। थर्ड टाइम भी वो जो बिच होती है कुतिया वो माँ बन जाती है और हथनी जो है वो उससे वो पूछती है कि बहन मैं तो तीसरी बार माँ बन गई और तुम, तो वो उसको कुछ नहीं बोलती और बस आगे जाती है। कुछ देर के बाद में जब कुतिया अपने बच्चों को सहला रही होती है, एक आवाज आती है, तेज आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत जोर का कुछ हुआ हो। वो डर जाती है और अपने बच्चों को एकदम छुपा लेती है अपने पेट के नीचे। थोड़ी हिम्मत करने के बाद वो उस डायरेक्शन में जाती है जिधर से आवाज आई थी, तो वो देखती है कि हथनी अपने बच्चे को चाट रही है, हथनी अपने बच्चे को सहला रही है और प्यार कर रही है। और हथनी उससे कहती है कि बहन देखो मेरा बच्चा। वो ये कहती है कि जब तुम्हारा बच्चा इस धरती पर आया तो बहुत कम लोग जान पाए, लेकिन जब मेरा बच्चा इस धरती पर उतरा तो पूरी धरती ने उसकी ताकत को महसूस किया, उसकी कंपन को, पूरी धरती ने उसकी ताकत और उसके शौर्य को महसूस किया। उन्होंने कहा जब कुछ बड़ा बनता है ना उसमें समय लगता है, और अगर समय लग रहा है तो कुछ बड़ा बन रहा है, और वो बड़ा जब धरती पर आएगा ना तो पूरी धरती उसकी ताकत को महसूस करेगी। इसलिए कभी घबराइएगा नहीं। अगर आप इनोवेशन कर रहे हैं और समय लग रहा है तो भरोसा रखिए, एकदम भरोसा रखिए कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा, इतना बड़ा जो आपको इतना नाम और इतनी शोहरत देगा जो शायद पहले आपको कभी ना मिल पाई हो। तो इसीलिए कभी इनोवेशन का रास्ता ही ऐसा है। जितने भी इनोवेटर्स हैं और जितने भी रिसर्चर्स हैं, हम सब ने ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने नॉन ट्रेडिशनल रास्तों को चुना है। हम उन रास्तों पे नहीं जा रहे जिन रास्तों पे दूसरे गए हैं, हम वो रास्तों पे जा रहे हैं जिन रास्तों पर पहले शायद कोई दूसरा ना गया हो। तो चूंकि आप द रोड नॉट टेकन काइंड ऑफ, तो जब आप नए रास्ते को चुनेंगे तो आपको वो नया रास्ता खुद बनाना होगा। परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, जैसे मैंने परेशानियों को झेला, समस्याओं को झेला। और सबसे बड़ी बात है इन्वेस्टमेंट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो इन्वेस्टमेंट के समय क्या होता है कि हमें दिल में कई बार ये फील होता है कि मैं इतना तो लगा दे रहा हूं पर इसके बदले मुझे मिलेगा क्या। आप सही समय का इंतजार कीजिए, आपकी स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है आपके पास, आपके सर पर आपके गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। जैसे मुझे आज लगातार एनसीआईडी की तरफ से मुझे लगातार हेल्प मिल रही है, लगातार काउंसलिंग होती है और हम पार्टिसिपेट करते हैं और मुझे नया रास्ता दिखाया जाता है यहाँ से। तो उस तरीके से आपके पास में, आपके साथ अगर आपके टीचर हैं, आपके गुरु हैं, तो आज नहीं तो कल डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल जरूर मिल जाएगी। आप इसको 100% आप इसको तय समझिए। तो ये स्टोरी उस कुणाल अम्बष्टा की थी जिसे पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज जितने भी मेरी स्टूडेंट हैं, जब मुझे स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड मिला और जब मैंने उसे शेयर किया अपने फेसबुक के जरिए, अपने व्हाट्सएप के जरिए, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि सर बहुत प्राउड फील हो रहा है सर कि आपसे पढ़े हैं। और अगर आप इस एज में सर, अगर अभी भी आपकी आप में ये पैशन बाकी है कि अभी भी आप ये नया करना चाहते हैं और अभी भी आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो सर हमें भी करना होगा, सर हमें भी आपके साथ आपके रास्ते पे चलना होगा। तो बहुत अच्छा फील होता है जब दुनिया आपको फॉलो करने की बात कहती है। आप और हम सब मिल करके एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं, और उस अच्छी दुनिया के लिए, उस अच्छे भविष्य के लिए इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत होगी। तब जाकर के हम आत्मनिर्भर बनेंगे। एक चीज और है, इस तरह की टेक्नोलॉजी में एक खास बात और है कि जब हम अपना डेटा कहीं शेयर नहीं करते तो कोई दूसरा नहीं होगा जिसके पास में आपकी प्राइवेसी की आपकी कीमती डेटा होंगे। आपकी प्राइवेसी का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा, और जब आपकी प्राइवेसी का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा तो आप खुद का डिसीजन आप खुद ले सकेंगे और आपको कोई दूसरा बाहर से बैठ के मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो जब आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे और जब हम सब आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हमारे प्राणों से भी प्यारा जो हमारा देश है, हमारी भारत माता है, हमारी भारत माता भी आत्मनिर्भर हो जाएगी पूरी तरीके से, और हम सब एक नया भारत बनाएंगे, वो जिसका हम सब ने हमेशा सपना देखा, हमारी सोने की चिड़िया हमारी भारत माता। तो बस इसी के साथ में मैं यही मेरी स्टोरी है। बस मैं यही कहूंगा कि हम सब मिल करके वो कर सकते हैं जो शायद अभी तक नहीं हुआ है। जय हिंद, भारत माता की जय।
Thank you, Kunal. That was an extremely exciting talk जो आपने अभी दिया, और हमारे जो सुनने वाले हैं they might be very excited and interested to ask you a lot of questions. सवाल होंगे उनके मन में भी. In fact, कुछ लोगों ने अभी hands raise किए हैं to ask questions and interact with you here. इससे पहले मैं invite करूं, I want to ask you a very small question. ये जो आपने नाम दिया है किया AI, तो ये नाम कैसे पड़ा? I think Kunal has been disconnected. अभी वो ज्वाइन करेंगे, so मैं इनवाइट करूंगी आरसी दिल्ली 1 को कि वो अपनी बात कहें, और जैसे कुणाल ज्वाइन करते हैं तो हम दोबारा आपकी बात उनके पास रखेंगे. Thank you so much, ma'am. Thanks for kindly giving me this opportunity. And मेरी तरफ से मैडम आज का जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत अच्छा था, बहुत यूनिक था, और सच में ही एक नया इंसाइट देने वाला एक प्रेजेंटेशन था. मैडम मैं बेसिकली हमारे जो आज के स्पीकर हैं मिस्टर कुणाल, इनके इनोवेशन के लिए इनको बधाई देना चाहूँगा, और हम सभी को सुनकर और देखकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा सिस्टम ये डेवलप कर रहे हैं. और मेरे मन में एक बस छोटा सा लेना चाहूँगा कि जैसे हम पहले भी देखते आ रहे हैं और हम कुछ हद तक हम यूज भी करते हैं, जो IVR टेक्नोलॉजी होती है, इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स वाली जो टेक्नोलॉजी होती है, तो जो इनके वाला जो इनोवेशन है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग IVR से किस तरह से डिफरेंट है, ये मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगा. Thank you, Dr. Sharma. Kunal would like to answer. Kunal? Yes, ma'am. First of all, thank you so much, sir, for your comment, sir. Sir, जो IVR टेक्नोलॉजी हमारे पास में अवेलेबल है सर, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम जो हमारे पास में अवेलेबल है सर, जितने सिस्टम्स को अभी तक मैंने देखा है सर, उसमें से बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं सर वो ऐसे हैं, अगर सारी की बात मैं ना भी कहूँ तो, जो इंटरनेट का सहारा लेते हैं सर, और आपकी वॉइस को डिकोड करने के लिए वो कहीं ना कहीं सर इंटरनेट सर्विसेज को यूज करते हैं सर. काश मैं सर आपके साथ शेयर कर पाता, बट सर क्योंकि पता नहीं सर, मैं प्राइवेसी चीजों को जानता हूँ तो थोड़ी सी सर ये प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैं इसको शेयर नहीं कर सकता. मैं जो डिवाइस यूज कर रहा हूँ सर, इस डिवाइस को जब मैंने स्टार्ट किया सर, एक्चुअली मुझे इसे रिसेट करना पड़ा था, तो इसने मुझसे पूछा कि आपकी वॉइस रिकॉग्निशन को बेटर बनाने के लिए क्या आप अपना वॉइस डेटा शेयर करना चाहेंगे. और सर हैरानी होती है कि आपके पास में यस बोलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है सर. अदरवाइज अगर आप यस नहीं बोलेंगे तो आपकी ये महंगी सी डिवाइस जो है वो बेकार हो जाएगी. तो इसमें क्या होता है सर कि जो हमें कई बार में ऐसा फील हो रहा है कि जो ऑफलाइन चल रही हैं उनकी रिकॉग्निशन को बेटर करने के लिए सर वो ऑनलाइन सिस्टम्स का सहारा लेते हैं और हमारा वॉइस डेटा को सर वो अपलोड करते हैं अपने सिस्टम पे. तो अगर सर हमारा वॉइस डेटा उनके सिस्टम पे अपलोड हो रहा है तो कहीं ना कहीं सर हमारी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है सर. वो कहते हैं कि हम कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स को सुनते हैं, बट सर बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ये कौन जानता है सर. हम सारे लोग तो आज तक जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी उन पर बहुत ज्यादा हमें भरोसा भी था और होना भी चाहिए सर, लेकिन हम सर आए दिन इनसे जुड़े हुए जो स्कैम्स हैं सर उनको सुनते रहते हैं. और उनको सुनने के बाद सर आप सब मुझसे काफी सर एक्सपीरियंस्ड हैं ज्यादा, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं सर कि आप उस पर कितना भरोसा करना पसंद करेंगे. थैंक यू मिस्टर कुणाल, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आप अपने इनोवेशन को विश्व स्तर पर लेकर जाएं, ऐसी हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं. शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर, आशीर्वाद है सर आप लोगों का. थैंक यू डॉक्टर शर्मा. अब मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर उमेश पांडे जी को, वो कुछ कहना चाहते हैं. डॉक्टर पांडे प्लीज. जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ममिता. और मिस्टर कुणाल ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा. और लेकिन मैं छोटी सी बात ये मेरे जो दिमाग में आ रही थी वो ये है कि ये जो आपका सिस्टम है
वो केवल हिंदी कमांड्स को भी समझ सकता है क्या? नहीं सर एक्चुअली सर अभी ये हिंदी कमांड्स को नहीं समझ सकता है सर। एक्चुअली मैं जो दूसरे सिस्टम पर भी वर्क कर रहा हूँ सर, उसमें हिंदी कमांड्स पर हम लोग काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे अगर मुझे इंडियन मार्केट में सर मेजॉरिटी हासिल करनी है, इंडियन मार्केट में सर अपने आप को स्टेब्लिश करना है, तो मुझे हिंदी लैंग्वेज का सहारा लेना होगा सर इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि ये सिस्टम को ठीक है, आप तो इसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए कह रहे हैं, लेकिन जैसे ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनको काउंसलिंग सर्विसेज देने के लिए, या उसमें हम अपना सिस्टम में अगर इग्नू का मटेरियल स्टोर कर दें और वो इसको एक्सेस कर सकें अपने वॉइस के थ्रू, सपोज वो एक्सेस कर पाए, तो मुझे लगता है कि उन स्टूडेंट्स को, जैसे इग्नू के सिस्टम में हम लोग के लिए, हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए जो रिमोट एरियाज में रहते हैं जहाँ इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज नहीं है, अगर उनको इस टाइप की कोई डिवाइस दे दी जाए तो मुझे लगता है कि उनको उनके लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है। ऐसा क्या संभव है कि उनको मीन्स रिकॉर्डेड काउंसलिंग सेशंस के हम उसमें रिकॉर्ड करके दे दें और फिर उनको जब भी किसी भी टॉपिक पर काउंसलिंग लेनी हो तो वो उसको सुन लें, या एटलीस्ट इंटरेक्टिव तो नहीं होगा उतना ज्यादा, लेकिन एटलीस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो कोई प्रश्न पूछते हैं और उसके संभावित आंसर्स अगर इसमें हो, उसमें ऑलरेडी स्टोर्ड हो, तो मुझे लगता है उनको बहुत मदद मिल जाएगी। डेफिनेटली सर, मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच सर, आपने ये कहा, और एक्चुअली किया जो है उसको मैंने इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए भी बनाया था। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है सर कि चूंकि ये रास्पबेरी पाई पर रन करती है, तो वो हार्डवेयर जो है सर वो बहुत ही मतलब हाई रिसोर्स नहीं है सर, उसमें बहुत हैवी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। मैंने क्या किया सर कि जो इंटायर लोड है उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि मेरे कमांड्स को वो आसानी से लेके उसको प्रोसेस कर सके और उसका रिजल्ट वो जनरेट कर सके। तो सर जो आप कह रहे हैं तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है सर किया के साथ में। अभी जो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया सर, इसमें 2 पार्ट थे सर। पहला पार्ट था सर आई वांट टू टॉक टू यू, जिसमें वो जनरल कन्वर्सेशन है सर। दूसरा पार्ट था सर सोलर सिस्टम। तो जब मैंने किया वो कमांड दिया सोलर सिस्टम, तो वो सोलर सिस्टम के मॉड्यूल पर स्विच हो गई और उसने सारे डिटेल्स जो है सोलर सिस्टम के उस सिस्टम पर लोड कर लिया। तो जो भी चीजें मैंने उससे पूछी कि मुझे मून के बारे में बताओ, टाइटन के बारे में बताओ, अर्थ के बारे में बताओ, सोलर सिस्टम के बारे में बताओ, तो सर उनके बारे में वो बताने लग गई। तो इसी तरीके से सर चूंकि ये इसका सर सबसे इनोवेटिव फीचर है सर, ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर इनोवेशन का एक बहुत बड़ा रोल है सर, कि मैंने पूरे लोड को एक साथ नहीं डाल के उसको चंक बाय चंक डाला है, ताकि सर एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके इस लो एंड डिवाइस पर भी। तो सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है सर कि हम स्टडी मटेरियल्स को इसके ऊपर लोड कर दें और लोड करके उन स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाए सर। थैंक यू डॉक्टर पांडे, थैंक यू कुणाल। डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी हैं, बहुत ध्यान से आपका टॉक उन्होंने सुना। तो डॉक्टर अग्रवाल, वुड यू लाइक टू आस्क और कमेंट ऑन हिज टॉक? नहीं, काफी कुणाल जी मेरी बेस्ट विशेस हैं आपको। और आपसे पहले हमारी जो है कॉन्ग्रेचुलेशन है डायरेक्टर एनसीआईडी और अमिता और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एनसीआईडी से, क्योंकि अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। कम से कम इससे कुछ पता चलता है कि आप एआई में और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है ये चीज़ों को जुड़ेंगे। और हम आपकी आगे के जो आपका कार्य है उसके लिए शुभकामनाएं करते हैं, जिससे कि आप जो है नए नए और भी इसमें जो है प्रोग्रेस करें, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी का लाभ है वो आम आदमी तक पहुंचे। थैंक यू। Thank you, Dr. Ashish. Moni Sahai, she wants to ask you a question. Moni, please. Yeah, thank you, ma'am, for giving me this opportunity. Dr. Kunal, Mr. Kunal, first of all, congratulations for your innovations and achievements. मेरा एक छोटा सा doubt है, because I am not a technical person, so I may sound like a layman, but still, because I have this question in mind, मेरा ये है कि ये जो आपने अभी कहा कि इसका 2 एस्पेक्ट है, एक सोलर सिस्टम आपने कहा, तो ये जो इंफॉर्मेशन आपका डिवाइस प्रोवाइड कराता है, ये इंफॉर्मेशन वो इंटरनेट से फेच करके प्रोवाइड करता है, या जो आपने उसमें इंफॉर्मेशन अपलोड की है वो प्रोवाइड करता है? और अगर ये नेट से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एलेक्सा? क्योंकि एलेक्सा भी वो वॉइस कमांड पे चलने वाला एक एआई वो है, तो एप्लीकेशन है।
तो उससे कितना डिफरेंट है? और अगर ये इंफॉर्मेशन लोड करते हैं हम लोग और वो रिट्रीव करके अगर हमको बताता है, तो क्या ये थोड़ा लिमिटेड फीचर हो जाता है क्या? First of all, thank you so much, ma'am. So this is Kunal Ambashta, and ma'am, thank you so much for interacting with me. Ma'am, सबसे पहली चीज कि when I say it works totally offline, ma'am, it means it works totally offline. यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी की कहीं कोई संभावना ही नहीं है मैम, क्योंकि मैंने पहले ही इस सिस्टम पे जो वाईफाई है, ब्लूटूथ है और जो इसके हार्डवेयर कनेक्टिविटी है मैम इंटरनेट से, उन इंटरफेसेस को बंद कर रखा है। दूसरी जो चीज है मैम, वो दूसरी चीज है कि ये जो है वो इन्फॉर्मेशन लाती कहाँ से है। तो मैम ये इन्फॉर्मेशन मैं खुद इसमें फीड करता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको डिजाइन करता हूँ, आपने जो सोर्स कोड देखा जब मैं प्रोग्राम के दौरान सोर्स कोड दिखा रहा था, तो इस सोर्स कोड में सारी इन्फॉर्मेशन इसके डेटाबेस में स्टोर की गई है। अब वो उन इन्फॉर्मेशन जो मैंने इसमें फीड की है, उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है या उनके सोर्सेस क्या हैं, तो उनके लिए मैंने जो सबसे बेस्ट इंसाइक्लोपीडिया है उनका इस्तेमाल किया है, जो सबसे ट्रस्टेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है मैम। क्योंकि मैं खुद भी टीचर हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि इंफॉर्मेशन की जो उसकी ट्रस्टवर्दीनेस है वो बहुत हाई होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें पहले से फीड कर रखी है और उन्हीं इन्फॉर्मेशन को ये रिट्रीव करती है और उसको हमें रिस्पॉन्ड करती है। अब आपने जो कहा मैम कि क्या इससे इसकी जो कह सकते हैं इसकी जो रीच है वो लिमिटेड हो जाती है या नहीं, तो यस मैम, इससे इसकी रीच लिमिटेड जरूर हो जाती है। लेकिन मैम ये वो जो लिमिटेड स्कोप है, मैं आपको बहुत सारा कुछ देने की कोशिश की है। एक छोटी चीज मैं यहाँ पर जरूर शेयर करना चाहूंगा मैम। जब हमारे पास में स्मार्ट टीवी नहीं था और जब हम नॉर्मल एलईडी टीवी पे थे, फुल फ्लेज्ड एलईडी टीवी पे थे, उसमें हमारे पास में एक रिमोट कंट्रोल होता था मैम। उस रिमोट कंट्रोल से हम चैनल बदलते थे, उसमें कुछ गेम्स भी होते थे, वो गेम्स भी खेलते थे। आज स्मार्ट टीवी के आ जाने से जब उसमें वाईफाई कनेक्टिविटी है, हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजों को उस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी चली जाती है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी जाने के बाद वो सिस्टम भी उसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा जिस पॉइंट पर आपके एग्जिस्टिंग एलईडी टीवी ऑलरेडी थे। तो यहाँ पर क्या है मैम कि मैंने ऑल्दो कि इसकी रीच अभी फिलहाल थोड़ी सी लिमिटेड है। लिमिटेड इसलिए है क्योंकि इंटरनेट पर डिपेंड नहीं करती और इंटरनेट से डेटा फैच नहीं करती। लेकिन बावजूद इसके मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को, चूंकि मैं इसको पूरी इन्फॉर्मेशन का लोड एक साथ नहीं डाल रहा हूँ बल्कि चंक बाय चंक डाल रहा हूँ। ये मेथड बहुत ही कारगर मेथड है, बहुत ही सक्सेसफुल मेथड है, जिसके जरिए मैम मैं चंक बाय चंक करके या बाइट बाय बाइट करके मैं इसको मॉड्यूल सप्लाई कर सकता हूँ जिस पर वो आपसे बातचीत कर सकती है। तो फिलहाल इसकी रीच तो थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन मैम ये एट द सेम टाइम आपको हाई सिक्योरिटी ऑफर करती है। और एलेक्सा ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट से फैच करके हमें देता है या उसमें भी कुछ लोडेड है, मतलब पहले से? सॉरी मैम, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। ओके, एनीवेज, थैंक यू मिस्टर कुणाल। थैंक यू मैम। Thank you, Dr. Moni. Now I invite Dr. Ranjita Panda for her comments. Good morning to all, and thank you, Dr. Momita, and to Dr. O.P. Sharma also. Thank you so much for such type of initiative, innovative work and platform you provided us. And actually, I would like to share thanks for Kunal Ambashta. Yeah, really, your willpower, your dedication and hard work for achieving your goal. It's really much appreciated. We should convey your message to others also so that they can do well. Hope you can keep up this quality of work to develop a series of new ideas, new innovation, नया सोच, नया खोज के साथ कोई भी आगे नया नवाचार कर सकता है। Wish you all the best, कुणाल जी, and इग्नू के साथ, देश के साथ आपके जो सोच है उसको बढ़ाइए। धन्यवाद। Thank you, Dr. Panda. We would like to invite others who are here. Would you like to comment or give your observations to Mr. Kunal's talk? Yes, Dr. Nayak, please. Thank you. Namaskar to everybody. I think Director RHD is also there. Namaskar Agarwal sir, and
I must congratulate Kunal Ambasta, and I can visualize a very bright future for him, because the way he has designed it, and the way I could see his passion for it. And for every successful thing, this passion is important. Be it innovation, be it profession, be it whatever we do in our personal life, we should have a passion for that. Unless somebody has a passion for that, and only success will come, that doesn't matter. That's what Kunal has established. He said you will have to bear with the failures, and that they tell you in what direction you are supposed to go, and you are destined to go, not supposed to go, you are destined to go. If you have the guts to deal with your failures, I think success is there for you. And that's what Kunal has established. And my best wishes to Kunalji for a great future. As I think Dr. Umesh Pandey, somebody said that, and I think Dr. Sharma said it, you should go on the international level. You must give exposure to this innovation on the international level, so that everybody knows what you are doing and what you are planning to do. Thank you very much. Namaskar. Thank you, Dr. Nayak. We have RC Kohima also with us. Would you like to give your comments, please? RC Kohima. कुणाल, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारे पास में इंडिया के बहुत सारे जगहों से हमारे रीजनल डायरेक्टर्स जुड़े हुए हैं जो आपका टॉक सुन रहे हैं. हाँ, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी आरसी कोहिमा और आरसी कोरापुट, आरसी विशाखापट्टनम, एंड डॉक्टर एस राधा फ्रॉम आरसी बैंगलोर. Would you like to give your comments, please? Madam, thank you so much. Really, it's a very good program. In fact, a very inspiring one. I was so happy to see that our student innovators, they are presenting the topic. In fact, it is very much needed also. So my request is, Madam, if possible, kindly arrange the student innovator programs on weekends so that many other students also may be able to join. As it's a working day, many of our learners are also busy with their job. Unlike our counseling sessions, some more session may be arranged with our innovative students. Really, I wish you all the best. Have some more sessions also with all our winners, Madam. Thank you so much. Thank you, Dr. Radha. This talk will be available in the Facebook page of IGNOU, and people can watch it in an asynchronous mode also. And many students would be watching later. And our resource person, our experts like Kunal, they can also visit the Facebook page. And if there are any queries, koi question, koi sawal hai, to he can answer. That provision is also there. So we will definitely look at your suggestions, Dr. Radha, and plan accordingly. So thank you so much. So if we do not have any other queries or questions or observations, I would like to invite Dr. Sharma to say a few words, please. In conclusion, Dr. Sharma. Thank you, Dr. Momita, and very nice presentation, Kunal. It's good to listen to you again, and then a complete story we have listened now. And you have seen so many suggestions are there. Our Vice Chancellor sir has also joined, so if he can, I would like to just tell. Sir, this Kunal Ambast is our student. He was awarded. We welcome you for this Facebook live session being organized by the NCID. So we are thankful to you for joining this session. Kunal Ambast had shared his journey of innovation. In fact, he is one of our innovator student who was awarded Student Innovation Award this time in 2021. And he has developed a AI-based innovative device which works on the automated command, like a home automation. You might have heard that there are home automation using the Internet of Things, everything.
switch on the light, switch on the fan, switching on the fridge and other electronic devices. But those things are based on the internet. But Kunal has developed a device which is not depending on the internet. It is depending on the artificial intelligence, and without any internet connectivity, those devices can be given command and they start working, they start stopping also, those all things. And in addition to that home automation, he is working on pedagogical aspects of also giving some cognitive that component to that Kia device, so that it could be used for other purposes, like even for teaching learning. One that component he has designed in that is like if he gives command like what is a satellite, what is a moon, what is the earth, so that device is able to respond to that. So this kind of device he has developed. So in today's program, we invited him to share the story of his innovative device development. He started right from beginning, how he thought of that concept, why that Kia or this kind of automation is required, and that too without using the internet, because there are many facilities they are working on the voice command, but they use basically the internet. But in case of internet, what happens? There are a lot of security breaches and problems of confidentiality data. Basically, whatever data we are giving in the command or in coding, that is shared with somebody. So there may be a great problem of security and confidentiality. That's why he thought of a device, particularly home automation, without using the internet. And that device he is calling that Kia AI-based automation device. And that is an innovation that he developed, and he was given this innovation award. And in this Facebook Live, we are inviting such students almost on every Friday. Last Friday, we invited one of our another awardee. And in addition to that, we are inviting some other persons also. So this is what he had presented. Kunal, Professor Srikant Mahapatra is our Pro-Vice Chancellor, and we are thankful to him. And then you may like to tell him in brief what is your device, so that he can understand briefly, very brief. Dr. Sharma, I have listened to Kunal right from the beginning. Oh, I see. That's a good thing. We are listening to him, but we do not. Don't tell him to repeat what he has already said. Sir. I was listening to him in YouTube. Okay, that's nice. So I thought that let me join in YouTube and see what is going on here. Yes, yes. Let me congratulate Kunal for this wonderful initiative and wonderful innovation and wonderful achievement. When he talked about Kodarma, talked about his university, Hazaribagh and Ranchi and so many other places, I was also relating to those places as a regional director in Bihar and Jharkhand. So I am very proud of you, Kunal, for your achievements, your determination, your innovative thoughts, ideas, how your father, your mother, your wife, your brothers have inspired you. But above all, your own commitment and determination and your willingness to accept failure to achieve success is something which is very, very important. And I think you have very rightly put it that if you want to achieve success, then you should be prepared for innovation failures. And you should not lose sight of, you should not feel disheartened, you should not feel disoriented. And you also said that how your eye got affected when you were working late in the night and doing all kinds of coding. I was looking at your coding page, though I could not read the codings which are in so many pages. But definitely these are your property. Coding is something which is close to your heart, and that is the command which is being read out by your innovation. So I wish you all the best and success
my colleagues, other regional directors, our director NCID have also said that you should put it in a more systematic way in the national and international forums. Now, IGNOU is very proud because you are a student of IGNOU. I was just wondering that a mechanical engineer has joined postgraduate diploma in computer application. I wish you do your MCA from IGNOU also. And since you have been awarded the Innovation Award of IGNOU for 2021, you are a proud student of this great university. I was seeing that in Facebook and YouTube, not many students were there. So that is something which I request the director and his team in NCID and all my regional directors in different regional centers to take care, because when we invite such innovators, we also should inform well in advance our students to participate. It's good that so many regional directors are there, but I will be very happy if I see all the other regional directors in the forum. I do agree with our colleagues that it could be in the second half of Friday, not in the first half of Friday, because first half we are all busy in different kinds of meetings and all. It is just a suggestion, not that you implement it with immediate effect. But since it is available in YouTube and Facebook recorded, so anybody, anytime when they are free, they can also watch this program. Kunal, your presentation was extremely good, extremely humble. Your smiling face really inspired us, because when we work in the tight environment, we don't smile. But I could see that all through you are smiling and you are being very humble in whatever you have done and presenting those things in a very, very simple and simplified way. Well done and all the best. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank In you, fact, sir. now he is one of the nominee for the Smart India Hackathon also. He is participating in the national level Smart India Hackathon also, because his innovation, we thought it should go to the national level also. So we are nominating him for that event, and hopefully he will be successful there also with the blessings of all of you. So, Need your blessings, sir. Need the blessings of all we of are my. always there with you, Kunal, and we want and we hope that you will reach many heights in future, and you can take suggestions also. What several suggestions have been given, particularly it may be good for the teaching learning purpose also. Kia may be used for teaching learning purpose. You can think of that aspect, because particularly in case of IGNOU, if that is possible, then it will be a great thing for the ODL system. You can start working on that. For sure, sir. I'll be really very happy if I can help others to learn, sir. And I'll be really very happy and will be eager to do that, sir. क्योंकि किया AI की जिस इनोवेटिव मेथड को मैं यूज कर रहा हूँ सर, उसके जरिए सर पूरे जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम है सर, जो लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, उन्हें हम फिजिकली चैलेंज और डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं. स्पेशली सर जो विजुअली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब वो स्टूडेंट्स कमांड देंगे तो ये उन कमांड्स को सुनेगी, और चूंकि इसकी सर एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, तो उन कमांड्स को सुन करके सर ये उनको आंसर्स बता पाएगी, तो उनको सीखने में बहुत मदद मिलेगी सर, और वो बहुत अच्छा कर पाएंगे. डेफिनेटली सर वो बहुत अच्छा कर अपना लैंग्वेज पार्ट पे भी काम करिए, जो पर्टिकुलरली हिंदी लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, उनको क्योंकि अभी एक तो आपकी जो इंग्लिश भी है उसका एक्सेंट भी थोड़ा सा यू कैन सी दैट इंडियन नहीं है, तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, मतलब योर प्रोडक्ट इज गुड, बट जो उसके एप्लीकेशन पार्ट है, यू हैव टू लुक इनटू दोस. सर्टेनली देयर इज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, और हम लोग आपको गाइड करते रहेंगे कि फ्रॉम टाइम टू टाइम कि कहाँ क्या कर सकते हैं. देन यू कीप ऑन वर्किंग एंड व्हाटएवर वी कैन हेल्प यू, वी आर देयर विद यू. डेफिनेटली सर, मुझे एनसीआईडी की तरफ से सर आपके गाइडेंस में सर बहुत हेल्प मिली है, और रेगुलरली जो आप लोगों ने मेरी काउंसलिंग की सर और मुझे गाइड किया, रियली आई मस्ट से थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. क्योंकि इससे पहले सर ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर सर मुझे इससे पहले सर कभी चांस नहीं मिल पाया सर. कभी 2017 में सर किया AI को मैंने बनाया था,
लेकिन तब लोगों ने ये इसके बारे में कहा कि जब दुनिया पूरी इंटरनेट के पीछे जा रही है, ये आदमी पागल हो चुका है और ये एक ऐसी चीज बना रहा है जो ऑफलाइन जाना चाहती है। तो लोगों ने कहा कि इसका कोई स्कोप नहीं है, तुम गलत जगह मेहनत कर रहे हो। लेकिन सर मैं बहुत खुश हूँ सर कि आपने इसकी ताकत को पहचाना सर, और आपने इस भविष्य को देखा, उस भविष्य को सर जो बहुत ही सुंदर है सर, और जहां पर प्राइवेसी हमारे हाथ में होगी, प्राइवेसी का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होगा सर, और हम आत्मनिर्भर होंगे। तो सर ये एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी होगी सर, जो दुनिया में हम सबकी हमारी मदद करेगी सर, और हमें इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करेगी। सो ये बिना आपकी ब्लेसिंग से सर, बिना इग्नू से जुड़े हुए ये बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता सर। और मैं सर अपने भाई, जो मेरा छोटा भाई है सर मृणाल अम्बष्टा, उसने सर मुझे गाइड किया, उसने कहा कि यू शुड परस्यू अ कोर्स फ्रॉम इग्नू, और सर उसी की मोटिवेशन है सर कि मैंने इग्नू से कोर्स किया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आप लोगों की, आप लोगों का आशीर्वाद आज मुझे मिल पाया सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you. So, Dr. Momita, we can now conclude, and we are really thankful to you, sir, for sparing time and listening to the entire program. In fact, I did not know that you have listened to the entire program. It's good that it is inspiring for us also, because we are trying to identify the students. You know, during these last 4 years, we have identified around 40-50 students, such innovator students. And we have invited them on different platforms, shared their ideas, whatever innovation they have done. And because of that, what is happening, many of our new students are getting inspired. They are coming forward. Every time, even for the Student Innovation Award, we are getting a large number of applications every time. So it becomes very difficult to identify, to shortlist the best 3. In fact, this time also, instead of best 3, we were forced to select the best 5. Because 3 we were not satisfied. We could not leave the 4th and 5th one. Though award was that first, second prize money was given to first, second, third, but we had to select the 5th and 7th, 4th and 5th also. That kind of innovative students are there with us, and they need to be guided and supported. That we are doing continuously. And this kind of program, Facebook Live every Friday and other programs, they are also motivating. So, and your suggestion that how we can attract more number of students to attend this Facebook Live and YouTube Live, I think that we will work upon. And I will request our regional directors also to circulate it among the maximum number of students, so that it reaches to the large number of students they can participate. So that will be good. So Dr. Ravi, I agree, from Electronic Media Production Center, he has raised his hand. Ravi, you want to ask something? Unmute yourself, please. Ravi ji. Sir, namaskar, sir. Thank you, sir. Thank you. No, your voice is not audible. Be louder. Is it okay, sir, now? Little better, not okay. Kunal ji, number 1, congratulations. Thank you so much. Impressive presentation. So, yes, sir told, we are working in the Electronic Media Production Center, Indira Gandhi University. Basically, we are looking after the media, audio and video. So, just my curiosity and suggestion also for you, there is a lot of demand for the community radio and FM radio jockeys. It means they have to do a multiple job. They have to talk, they have to play a CD, and they have to give a text, they have to answer a telephone and all those things. Can we develop a one system? Every day anyway we are having a one schedule. What is going to be broadcast? I will load in my computer. Instead of going for this thing and physically taking CD and playing and all those things, is it possible to say, if I say a command of play national anthem, immediately it should play. Otherwise, if I say a photograph, show IGNO photograph. I'm talking about web radio, not this thing and all that. Is it possible with you? So can we develop that system? Yes, sir. Secondly, just extension coming to video also, lot of cable TV stations are there in India. Every day evening they are running a news. The problem what they will find that people will go for shooting morning and they will load it in a computer. Very short time they have to change the changes and all those things in news item. Suppose if they say
PM coverage. Otherwise, if they say CM Andhra Pradesh, immediately that have to bring the photograph of the CM Andhra Pradesh. So by that time, that editing time will be saved. It gives a lot of time for saving for the post-production, particularly for the news and all those things. My request also, if you develop that type of system, it will be very useful for open testing learning also, for making the programs and all those things for Swayam and Swayam Prabha, and for other, you can actually, it will be a lot of market for the cable TV and the event management, editing and all those things and production, they can be helpful. If it is possible, please try. That is my request. For sure, sir. I'll be really very happy to do that, sir. Actually, sir, I'm also running 2 different programs, sir. First one is the Kia on the Wheels. So Kia on the Wheels is basically the Kia robot, sir, that can move. Basically, Kia is right now on the top of the table, sir, and Kia cannot move. But with the help of Kia on the Wheels, that is my next project, sir. All the cognitive skill of the Kia will be there on the wheels, and Kia will walk along with you, sir. So you can just talk to Kia, and Kia will keep on walking with you. Wherever you will go, Kia will follow you. So that is one part. So second part is I'm also developing it on the CPU, sir, means on the computer system. So on the computer system, sir, it is performing much faster, sir, because our computer offer higher resources, computing resources to be used by the Kia. So if Kia can run on such a low system, sir, that offers just 1.5 gigahertz of clock speed, sir, computing speed. So Kia can work much better, sir, on the computers that offer 3 gigahertz, 3.2 gigahertz, and so on, sir. So projects also going on there, sir. With your blessing, sir. You consider the issues suggested by Dr. Ravi Ayagiri. He has stated some problems. If you can work upon those problems and then find some solution, then I think it will be a good thing, particularly for those who are working in this field. So you can start working, and if it is possible, then you come back to us, and then if you want some kind of support. And Rashmi Rekha has also raised her hand, so please invite her. Yes, please, Rashmi Rekha ji. Thank you, sir. Thank you, everyone here. I'm really proud to, be part of this family. And thank you, Momita ma'am, OP sir, OP Sharma sir. And I don't know, I would like to take each one of your names. And I'm really impressed with Kunal sir's work. It is being really awesome to see, that this Kia is going to work without internet. And that's something marvelous we can do, because what I think is we should learn to survive and innovate without we can take definitely along with all the innovations with us, but yes, if we we learn to survive with things which are it's not addictive or it's not driving the world, that's something which is marvelous, which is wonderful. So I'm also looking forward for put some innovations like how Kunal sir has put. So yeah, really want to get in touch with Kunal sir so that I can get some ideas and put into my venture. And because my venture is not about products, it's about the services, and it's about the human behavior. So I really want to understand how I can inculcate all this type of innovation into my offerings. So I request Kunal sir, if you can update us with your number, so that even we would it's really inspiring. So I would love to put something into my venture like this. Thank you, sir. Thank you. And thank you everyone for being there. It's really nice. I missed many things because I was on my work. So just a request, if this type of meetings can happen little, maybe second half, that would be great. And thanks everyone. Thanks once again, Sharma sir, Momita ma'am, and all the regional directors of
IGNOU. Thank you so much, IGNOU, for providing us such a nice platform. Thank you, Rashmi. Sir, Dr. Thank you. Mahapatra ji. Rashmi is our another student. She is an innovator, and she has attended many of our trainings also, and we are trying to nurture her innovation as well. So, Rashmi, I'd like to say here that what Thank Kunal you. has done is something called disruptive innovation. It's a very revolutionary thing when the world is going one way and you're going the other. Exactly. So you can That is imagine what the I enormous. was saying, that in this era of internet, where everybody is completely depending on internet, if we find out something which is which is out of this whole thing, then that would be something really that is really appreciable. So yes, what we have Yeah, learned thank you. from this pandemic is that we can't expect some one thing, we can't depend on something one thing, and we can be the work can be done staying at home. There could be flexibility in each and everything, so we should should look have for choices. more. Yeah, we Correct, should ma'am. have choices. Yeah. Correct. So, sir, with your permission, we may like to end the session if we do not have any other comments or suggestions. Dr. Sharma, shall we end the session? Yes, yes. So, I would like to thank our Pro Vice Chancellor, Dr. Shrikant Mahapatra, for gracing this event and give his blessings. I thank all the directors and heads, regional directors, faculty members, and academics of IGNOU for attending today's session. I thank Mr. Rajesh Sharma, head of the Public Information Unit, for providing NCID with the Facebook platform and ensuring the smooth conduct of the session with utmost dedication. I thank Dr. O.P. Sharma, Director NCIDE, and my colleagues, Dr. Jyotsna Dikshit and Dr. Sujata Santosh, for their untiring support. I thank Mr. Pawan Kumar for extending his assistance in the smooth conduct of this program. And last but not the least, I would like to thank Kunal Ambasht for sparing his valuable time to come and motivate our IGNOU students with his inspiring talks. Thank you very much, Kunal. So this brings us to the end of today's session. I hope to see you next week. Till then, namaste. Thank you. Thank you. Thank you very much. Namaskar. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.